The writer refers to visitors to New York to illustrate the point that writer refers to visitors to New York to illustrate the point. First question should be in the first paragraph. What is exploration? And if you locate the keyword New York is in the last line. Let's quickly read the last line, and it starts from here. This questioning nature of ours undoubtedly helps species spread around the globe, just as it nowadays no doubt helps the last nomadic peasant maintain their existence in the depleted forest of Borneo and a visitor negotiating the survey of New York. दिस क्वेश्चन मतलब ये हमारा क्वेश्चन करने का जो नेचर है इस चीज़ ने हमें पूरे ग्लोब में फैला दिया. So if we want to better understand what this question is, we can read the prior lines as well. We are all explorers. Our desire to discover and then share the newfound knowledge is part of what makes us human. Indeed, this has played an important part in our success as a species. Long before the first caveman slumped beside the fire, grunted news, there were plenty of wildebeest ancestors. Exactly, वही चीज़ है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर की, और ये हमारे एक्सप्लोर करने की जो नेचर है वही हमें ह्यूमन बनाती है. और ये चीज़ चाहे वो उनकी है, एंसेस्टर्स की है, या चाहे वो आज न्यूयॉर्क घूमने वाला कोई एक ट्रैवलर है. Exploration is an intrinsic element of human beings. So this is what is very much within the human beings. Most people are enthusiastic about, it's not about the most people, it's about all humans. Exploration can lead to surprising results. So it's once again, it's not talking about the surprising results, it's just talking about that it's in our nature that we want to explore the things. And finally, most people find exploration daunting. तो ये तो negativity की तो बात ही नहीं आई कि उनको ये मुश्किल लगता है. So undoubtedly the correct answer is A. So for this you have to actually hit the right keyword in the question. Do not read the statements at all to confuse yourself, and always read less but read fast. Next one is, according to the second paragraph, what is the writer's view? Explorers. So save our time by stating second paragraph में writer का view देखना है explorers के बारे में क्या है. Over the years, we have come to think of explorers as a peculiar breed. Peculiar is odd. अजीब लोग होते हैं, different from the rest of us, different from those of us who are merely well-traveled. Even and perhaps there is a type of person more suited to seeking out the new. A type of caveman more inclined to risk venturing out. That, however, doesn't take away from the fact that we all have this inquiring instinct. Once again, we are always there. We want to question the things even today, and that is in all sort of professions, whether artists, marine, astronomers. Okay, so the prime thing he wants to say is that we all have this inquiring instinct. और ये जो है कि we have come explorer, हम उनको ये कहते हैं कि ये अलग लोग होते हैं. It's not, they are not different, because every one of us has this thing. The discoveries have brought out benefits and disadvantages. शायद इसकी तो कोई बात ही नहीं हुई है. Their main value is in teaching others, कि उनकी main value है कि वो दूसरों को teach करते हैं. They act on an urge that is common to everyone. देखिए वो चीज़ आ गई, everyone, हर किसी में ये चीज़ होती है और उसी urge पर ये काम करते हैं. They tend to be more attracted to certain professions than to others. बिल्कुल भी नहीं, professions की बात जरूर हुई है, लेकिन ये कहा उसने कि कोई भी profession हो उसमें ये चीज़ आपको नजर आएगी. So we would go with the answer C. The writer refers to a description of again Heath to suggest that. Let's figure out where this, and of course it is in the third paragraph, इसको पढ़ना है, then we will decide that what he is trying to describe about this person probably. Thomas Hardy said some of his novels in Heath, a fictional area, so it's a place of uncultivated land, and use the landscape to suggest the desire and fears of his characters. He's delving into matters we all recognize because they are common to humanity. This is surely an act of exploration, and in the world as remote as the author choose. Okay, so he goes into the remote areas which are still recognized by most of us. इस चीज़ की बात की है उसने. Explorers and travel writer Peter Fleming talks of the moment when the explorer returned to the existence he has left behind. He has left behind with loved ones. The travelers who has for weeks or months seen himself only as a funny and irrelevant alien
crawling laboriously over a country in which he has no roots, no background. Suddenly, यहाँ पर connectors देता जा रहा है कि एक बार तो वो अपने loved ones को छोड़ता है, फिर returns to the existing, he has left, और फिर यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसी जगह पे घूमता है जिससे वो कनेक्टेड भी नहीं है. Suddenly encounter his other self, a relatively solid figure with a place in the mind of certain people. Now, what you see in the options here, Hari was writing about his own experience of exploration. वो अपने experience की बात कर रहा है, वो तो characters की बात कर रहा है. Hari was mistaken about the nature of exploration. कहाँ पर उसने mistaken होने की बात की है. Hari's aim was to investigate people's emotional state, and this is very much because he is trying to say कि एक बार loved one को छोड़ना और दोबारा से उनके साथ connect होना, उन लोगों के पास जाना जहाँ पर वो emotionally उनके साथ connect नहीं हो सकता क्योंकि उनके साथ उनके कोई roots नहीं है, वहाँ पर वो बिल्कुल एलियन है. एंड हारीज एम टू शो द अट्रैक्शन ऑफ आइसोलेशन. वो ये नहीं बताना चाहता कि आइसोलेशन कितना मजेदार होता है, वो उसने जस्ट ये जस्टिफाई किया दैट आई स्पेंड टाइम इन आइसोलेशन. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. In the fourth paragraph, the writer refers to a golden age. Fourth paragraph में कुछ golden age की बात हुई है. And what is golden age? Let's figure out. In this book about the exploration of Earth's surface, I have confined myself to those who travel, who are real and who also aimed at more than personal discovery. मतलब जिन्होंने real में travel किया और personal discovery से ज़्यादा. But that still left me with another problem. The world explorer has become associated with the past era. We think back to a golden age, यहाँ पर दोबारा, as if exploration peaked somehow in the 19th century, as if the process of discovery is now on the decline, though the truth is that we have named only 1.5 million of this planet species, and there may be more than 10 million, and that's not including bacteria. We have studied only 5% of the species we know. We have scarcely mapped the ocean floors and know even less about ourselves. Anyway, very much clear कि एक बार 19th में ये पीक पे जब गया एक्सप्लोरेशन और समझा जाता है कि अभी कुछ रह नहीं गया है एक्सप्लोर करने को, बट ही इज गिविंग द फैक्ट्स कि वी हार्डली नो एनीथिंग. 10% भी हमें नहीं पता है, यहाँ पर 5% हमें नहीं पता है, और यहाँ पर हमें तो अपने बारे में नहीं पता है. दैट मीन्स देयर इज मोर टू डिस्कवर. वी कांट से कि डिस्कवरी खत्म हो चुकी है. The amount of useful information produced by has decreased. नहीं, डिक्रीज नहीं हुई है, वो वैसे कह रहा है कि उस टाइम पर वो पीक पे थी. Fewer people are interested in exploring than in the 19th century. Is it about the interest of the people that पहले कितने लोग interested थे और अब कितना है? कुछ भी ऐसा नहीं है. Recent developments have made exploration less exciting. मतलब ऐसी कुछ explorations हुई हैं जिसकी वजह से ये मजेदार नहीं रहा. कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है. We are wrong to think that exploration is no longer necessary. Isn't it the correct answer? कि अगर हम ये मान के चलें कि exploration की अब ज़रूरत नहीं है, it would be wrong because there is still so much to explore. In the sixth paragraph में अब जंप करवा रहा है. अभी हमने last fourth paragraph पढ़ा था. When discussing the definition of exploration, the writer argues, वो अब किसी चीज़ पे argue कर रहा है. Each definition is slightly different and tend to reflect the field of endeavor of each pioneer. तो बहुत ही पहली लाइन में उसने क्लियर कर दिया. अब फर्दर इसी की एक्सप्लेनेशन रहेगी कि हर एक डेफिनेशन डिफरेंट है और ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है, उस फील्ड के पायनियर को. पायनियर होता है जो भी अपने फील्ड में सबसे पहले कोई काम करता है, ही इज द पायनियर. तो मतलब जैसा फील्ड वैसी ही उसकी एक्सपर्टीज और वैसी ही उसकी डेफिनेशन. It was the same, however, I asked. The pioneer historian would say exploration was a thing of the past. The cutting-edge scientist would say it was of the present. So I really believe that this is enough to figure out the answer. कि हर बंदा अपने हिसाब से इसके बारे में सोचता है. People tend to relate exploration to their own professional interest. Isn't it straightforward? यही आंसर होना चाहिए, but we will still go ahead and read the remaining options. Certain people are likely to misunderstand the nature of exploration. Certain people की बात हुई है कि वो misunderstand करते हैं. The generally accepted definition has changed. So generally definition है ही नहीं है क्योंकि इसकी वो कह रहा है कि हर एक definition slightly different है. Historians and scientists have
more valid definitions than the general public. So it's not about the comparison कि general public के पास कैसी definition और इनके पास कैसी है. I will go with the first option without any doubt. In the last paragraph, the writer explains that he is interested in, last paragraph है ये, और वो किस चीज में interested है. I would declare my own bias. As a writer, I'm interested in the exploration of ideas. I have done a great many expeditions and each one was unique. I've lived for months alone with an isolated group of people all around the world, even to uncontacted tribes, but none of these things is one of the slightest interest to anyone unless through my books. मतलब जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं उसमें शायद दूसरों का इंटरेस्ट नहीं होगा जब तक वो मेरी बुक नहीं पढ़ते. I found a new land, explored a new idea. Why? Because the world has moved on, the time has changed. मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ही लेते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स रह गई हैं क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं आया मेरे माइंड में. वी नो हाउ द लैंड सरफेस ऑफ अ प्लैनेट लाइज. Exploration of it is now down to the details, the habits of microbes, say, or the grazing behavior of buffalo. Aside from the deep sea and deep underground, it's the era of specialists. However, this is to disregard the role of human mind has in conveying remote places, and this is what interests me, how a fresh interpretation, even of a well-traveled route, can give its reader new. I would say कि अगर हम ट्रैक कर लेते इस जगह पर पहुंच जाते इंटरेस्ट मी, तो शायद हम जल्दी लोकेट कर लेते उसको क्या लगता है, और यही उसने पूछा है इंटरेस्ट के बारे में. हाउ अ फ्रेश इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन इज अंडरस्टैंडिंग. जो पहले है वो तो है, लेकिन अगर हम दोबारा से उसी चीज को इंटरप्रिटेट करेंगे, इवन अ वेल ट्रेवल रूट जहां पर हम कई सौ बार गए होंगे, कैन गिव इट्स रीडर न्यू इनसाइट, मतलब उसमें कोई चीज नई उसको मिल सकती है. हाउ समवंस पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस, बिल्कुल गलत. द ह्यूमन एबिलिटी टू कास्ट न्यू लाइट ऑन प्लेस दैट मे बी familiar, काफ़ी हद तक हो सकता है क्योंकि न्यू लाइट भी आ गया, वहाँ पर न्यू इनसाइट है, और मे बी फेमिलियर वो कह रहा है कि वेल ट्रेवल रूट जहाँ पर हम बार बार गए हैं. हाउ ट्रेवल राइटिंग हैज़ इवॉल्व टू मीट चेंजिंग डिमांड्स, नहीं वो अपने बारे में पूछ रहा है. द फीलिंग दैट राइटर्स डेवलप अबाउट द प्लेस दैट दे एक्सप्लोर, एब्सोल्युटली नॉट. द undoubtedly the correct answer is target your dream score in IELTS with IELTS Academic Score. Amazing program जिसमें आपको मिलते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑफ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग प्लस वोकैबुलरी. एक ही जगह पर एक ऑर्गेनाइज 15 डेज का क्रैश कोर्स फॉलो करने को आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन पे, और ये मिलता है आपको 6 मंथ्स तक के वैलिडिटी के साथ, सो दैट दिस 60 to 80 आवर्स प्रोग्राम आप अपनी कंफर्ट से फॉलो कर सकें. 100+ वीडियोस, 100+ टेस्ट, मेनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वुड फाइंड एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एंड with that you can improve your score. स्ट्रगलर्स के लिए या जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है लेकिन स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. Why not you download my application right now and check out some of the demo contents जो हमने आपके लिए रखे हैं बिल्कुल फ्री, and I'm pretty sure at this price you cannot find such an effective program that comes with unlimited study material free of cost.